Hello everyone, welcome to my channel Drive Forward. So this channel is about English learning. So today where I'll take a few words of intermediate level. I'll tell the meaning, synonyms and antonyms of those words, and we will also see how those words can be used in a sentence. So the first word is fascinate. Fascinate, and fascinate is verb. Okay, and the meaning of this word is to attract or hold someone's attention. किसी चीज को देख के बहुत ज्यादा मुतासिर हो जाना, बहुत ज्यादा attract हो जाना, उसका मतलब होता है fascinate. Let's try to find out the synonyms of this word fascinate. That it can be attract, captivate, charm. Okay, and what can be the opposite or antonym of the same word? So antonym of the word can be bore, repel, disinterest. Bore, repel, disinterest. And how will I use this word in a sentence? So it can be the magician's trick fascinated the children completely. इसका मतलब है मैजिशियन का ट्रिक इतना बेहतरीन था, इतना अच्छा था कि बच्चे जो हैं बिल्कुल अट्रैक्ट हो गए उसके ट्रिक से. राइट नाउ लेट्स सी द सेकंड वर्ड दैट आल्सो स्टार्ट्स विद द लेटर एफ. फ्रैग्रेंट. Fragant, and this is adjective describing word, right? And let's see what is the meaning of this word fragrant. The meaning of this word is having a pleasant smell. बहुत अच्छी सी खुशबू आना, भीनी भीनी सी खुशबू आना जो आपको बहुत अच्छी लगती है, उसको fragrant कहते हैं. Let's see the synonyms of this word fragrant. Aromatic, sweet smelling, perfume, aromatic, sweet smelling, perfumed, or even scent. So these are the synonyms of the same word. Let's see the antonyms of the same word. Odorous, ordered you can say, stink, foul smelling, बहुत बुरी बदबू आना, order. Okay. So let's see how I can use this word in a sentence. The garden was full of fragrant flowers after the rain. The garden was full of fragrant flowers after the rain. The third word is fragile, and fragile is also adjective, which means easily broken or damaged. जो बहुत ही नाजुक सी चीज होती है, आराम से टूट जाती है, उसको हम fragile कहते हैं. Delicate, बहुत ज्यादा. Okay, let's see the synonyms of the same word. Delicate, weak, breakable. Delicate, weak, breakable. Let's see the antonyms of the same word. It is strong, sturdy, durable. लोग कहते हैं ना मुझे बिल्कुल स्टडी टेबल चाहिए जो आसानी से नहीं टूटे, जो बहुत स्ट्रांग हो. राइट, सो दैट इज द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड फ्रेजाइल. दैट इज स्टडी, जो बहुत मजबूत होता है. लेट्स सी हाउ फ्रेजाइल कैन बी यूज्ड इन अ सेंटेंस. बी केयरफुल, द ग्लास वास इज वेरी फ्रेजाइल. ध्यान से, ये जो ग्लास वास है ये बहुत ज्यादा नाजुक है. ओके, लेट्स मूव टू द फोर्थ वर्ड विच इज फ्यूरियस. फ्यूरियस मीन्स एक्सट्रीमली एंग्री. जब आप बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं तो उसको हम फ्यूरियस कहते हैं, और ये भी एडजेक्टिव है. ओके, एंड व्हाट कैन बी द सिनोनिम ऑफ द सेम वर्ड? इट कैन बी enraged. Okay, raged. The antonym of the same word can be calm, peaceful, gentle. बहुत ही ज़्यादा शांत. Okay. Now, how I can use a fragile, how I can use this furious in a sentence. So let's see. The teacher was furious when no one completed their homework. Teacher बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए जब किसी ने homework नहीं किया. ओके, जाहिर सी बात है जब कोई होमवर्क नहीं करेगा तो टीचर तो गुस्सा होंगे ही. राइट. ओके, नाउ द लास्ट वर्ड ऑफ द डे. सो द लास्ट वर्ड इज फ्लैटर. FLATTER. This is verb. The meaning of this word is to praise someone insincerely for their favor. ओके, आप किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं क्योंकि आपको उनसे कुछ काम निकलवाना है. राइट, सो इसका मतलब होता है फ्लैटर. लेट्स सी द सिनोनिम्स ऑफ द सेम वर्ड. कॉम्प्लीमेंट, प्रेज, बटर अप. Compliment, praise, butter up. And the antonyms of the same word can be criticize, insult, offend. Okay, let's see how it can be used in a sentence.
He tried to flatter his boss to get promotion. उसने अपने बॉस पे बटर लगाया, बहुत ज्यादा तारीफ की ताकि उसको प्रमोशन मिल सके. Okay, so these are the five set of words I have used today. There are two friends, Arjun and Ria. So let's see what they are saying here for their exams. Are they prepared or not for their exams? Okay, so let's see. So I hope you are getting everything which I'm just sharing here. So if you feel that my video is informative, then you can share it with your friends and family. I'll come up with another interesting video. Till then, take care. Bye bye, and thanks for watching.